Hello my dear students, welcome back to the next lecture. Today I will give a lecture over the superposition principle. What is the superposition principle? Say there are so many charges. So here, this is x-axis, this is y-axis, this is z, this is space. For example, we have a number of charges q1, q2, q3. So many charges are there. So this is q1, this is q2, q3, q4 and so on. So that it's qn. कहाँ पे रखेंगे? Point P1, point P2, point P3, point P4, so on. Let it be point Pn in a Cartesian coordinate system. Let its position vector is say r1 vector, its position vector is say r2 vector, its position vector is r3, its position vector is say r4, and its position vector is rn. तो मान लेते हैं there are n charges in a space. What are the charges? Q1 is the charge kept at point P1. This is Q2, this is Q3, Q4, Qn. There are so many charges in the space, and their position vectors from the origin is R1, R2, and Rn respectively, and it is kept in an isolated system. Then what is the total force exerted on any one charge? For example, Q1. Q1 charge पे सभी चार्जेस कैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे? तो मान लेते हैं सभी चार्जेस पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली Q1 पे पहले Q2 एक्सर्ट करेगा फोर्स इन दिस वे. This is the force on 1 due to 2, and since force is a vector quantity, so we will put a vector over it. फिर Q1 पे Q3 भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, repulsive force in this direction, F13. Similarly, this is force on 1 because of 4, and so on. So nth charge भी इस पे exert करेगा force in this way. This is a force on first because of n. So what is the total force on Q1 due to all other charges? And it is given by the vector sum of all the forces exerted over Q1 by the individual charges. Q1 पे total force जो बाकी charges exert कर रहे हैं उनका vector sum. The total force exerted on any given charge is the vector sum. Why it is a vector sum? Because the force is a vector quantity. तो इसलिए हमने इसको vector sum करना. So see, the total force exerted on Q1. What is total force exerted on Q1? That is force on 1. ये हमने निकाला vector sum. It will be force on 1 because of 2, force on 1 because of 3, plus force on 1 because of 4, plus so on, force on 1 because of nth charge. Force on 1 because of 2, force on 1 because of 3, because of 4, plus so on, and force on 1 because of the nth charge. इन सब का हमने vector sum निकाला. And vector sum you have studied in class 11th. दो forces कैसे निकालते हैं, 3 forces कैसे निकालते हैं. We'll do that thing in numericals, but in theoretical part हम कैसे निकालेंगे? Now see, what is the force on 1 due to 2? Force on 1 due to 2. As per the Coulomb's law, we have 1 upon 4 pi epsilon naught. 1, 2 है, so we'll write Q1, Q2 divided by some distance whole square and r cap.
सिंस वेक्टर क्वांटिटी तो हमें यहाँ डायरेक्शन देनी है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इफ इट इज 1 2 तो यू राइट हियर 2 1, तो यहाँ पे भी 2 1 लिख लेते हैं, प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, वो क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R cap 3 1. Here is 3 1 square. So on. What is the force on 1 because of the nth charge? It will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q nth charge divided by R square R cap. If it is 1n, it should be n1. तो यहां पे भी हम n1 square. See once again. What is the force on 1 because of the second charge? इसके ऊपर इसके कारण क्या आएगा, तो 1 upon 4 pi epsilon naught is there, Q1 Q2 two charges, then we have the distance का square. What is R21? R21 is the distance between this and this, so this is R21 distance, R21 whole square. Here it is R cap 2 1. Similarly here, force on 1 because of 3, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 Q1 Q3 R cap, if it is 1 3 we'll write 3 1 divided by R 3 1 whole square plus so on. Now F1 equals to, see here, we can take 1 upon 4 pi epsilon naught as common. What is left inside? Q1 Q2 R cap 2 1 R 2 1 square, Q1 Q3 R cap 3 1 R 3 1 square, and so on. Q1 Qn R cap n1 or n1 का square. So this is equation number first. This is the total force exerted on charge Q1. Next, total force exerted on charge Q2. What will be that? Force on 2. Total force on charge 2. फॉर एग्जाम्पल अब इस पे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स ऑन टू इस चार्ज पे पहले तो फर्स्ट वन विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ टू, ये नहीं हो सकता बिकॉज अपना एक चार्ज अपने ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, तो फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, दिस शुड नॉट बी फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ टू, प्लस force on 2 because of 3, force on 2 because of force, then so on, force on 2 because of nth charge. See here, a charge cannot exert a force on itself, so force on 2 because of 2 should not be there. So let's put the value. क्या आना चाहिए, 1 upon 4 pi epsilon naught. Let's take 1 by 4 pi epsilon naught common, सब में 1 by 4 pi epsilon naught common आ जाएगा. If it is 2 1, what can I write? Q2 Q1. If it is 2 1, I will write R cap 1 2 और नीचे R1 2 का whole square plus F2 3, तो क्या आएगा Q2 Q3 R cap, if it is 2 3 it should be 3 2 divided by R 3 2 का whole square, so on. This is Q2 Qn R cap n2 R n2 का whole square. This is equation number 2. This is the force exerted on the second charge. Similarly, we can do force on 3. That will be force on 3 because of 1, force on 3 because of 2, force on 3 because of 3 नहीं होगा, so force on 3 because of 4, force on 3 because of 5, and so on, force on 3 because of n. ऐसा ले लेते हैं जनरल,
in general, let's take in general, the force on the ith charge, ith, कोई ith charge ले लेते हैं, कोई भी charge, for example यहाँ पे कोई ith charge है, qi, what will be the force on ith charge? That will be force on I because of 1, force on I because of 2, force on I because of 3, so on, so on, so on, force on I because of n. बीच में एक जनरल पॉइंट और ले लेते हैं, फोर्स ऑन आई बिकॉज ऑफ सम जे, एंड प्लीज टेक इट, आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे, क्योंकि अपने ऊपर ही चार्ज फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, तो आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे. जैसे यहाँ पे F22 नहीं है या F33 नहीं है, यहाँ पे FII नहीं हो सकता, तो आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जे. तो लेट्स डू. 1 by 4 pi epsilon naught is taken as common. What will be this? Force on ith because of 1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? QI Q1 R cap. If it is I1, I will write 1I divided by R1I whole square plus I2 है, तो क्या लिखेंगे हम? QI Q2, फिर क्या लिखेंगे? R कैप I2 है, राइट 2I डिवाइड बाय R2I का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, सो ऑन. हाँ, I और J भी है, तो उसके बीच में क्या लिखेंगे? QI QJ IJ है, तो यहां क्या आएगा? R कैप JI, नीचे R कैप JI का होल स्क्वायर, सो ऑन, सो ऑन. nth है, क्या लिखेंगे? QI QN R कैप NI डिवाइडेड बाय R NI होल स्क्वायर. See, 1 upon 4 pi epsilon naught is taken as common. QI Q1 QI Q1 R कैप I1 है, 1I आएगा. प्रीवियस लेक्चर्स मैंने समझाया कि ऐसा क्यों होता है. तो R1I का होल स्क्वायर, फिर QI Q2 R2I R कैप 2I और R2I का होल स्क्वायर. फॉर जनरल थिंग J के लिए QI QJ IJ है, तो R कैप JI और RJI का होल स्क्वायर प्लस सो. लेट्स सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे फोर्स ऑन ith चार्ज क्या लिख सकते हैं? वेक्टर 1 upon 4 pi epsilon naught. See summation. General, in general, I will take this QI QJ R cap JI divided by RJI whole square. The question is that what is J and what is I? See, I and J can be 1 to n. See, अगर I ith है तो यहाँ I क्या है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ I ith है. It can be up to 1 n. तो कोई भी चार्ज हो सकता है 1 से लेके n तक, इसलिए I की वैल्यू भी 1 से लेके n तक. J की वैल्यू भी 1 से लेके n तक, जैसे ये सभी J हैं, ये सभी J हैं. लेकिन what is more important, I should not be equals to J. I should not be equals to J. I और J इक्वल नहीं होने चाहिए. I, हाँ नीचे लिख रहे हैं, हम नीचे लिखने अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं वो लिख लेता हूं क्या? I should not be equals to J. So this is the final expression. This is the final expression. I am writing this final expression once again here. See, force on ith charge will be 1 upon 4 pi epsilon naught summation QI QJ QI QJ R cap JI divided by RJI whole square
See, I and j can be from 1 to n. But what is the most important condition? I should not be equals to j. Why I should not be equals to j? Because a charge cannot exert a force on itself. जैसे यहाँ पे F11 नहीं है, यहाँ पे F22 नहीं है, यहाँ पे F33 भी नहीं है, तो यहाँ पे F I या JJ नहीं दोनों हो सकते हैं. This is the superposition principle. What superposition principle gives? The force exerted on a charged particle because of the other charged particle. And for the derivation sake, this is the type of derivation. And you can use this derivation for solving numericals. That's all for today. Thank you. Thank you very much.